होता है जो भी साड़ी में हल्का सा भी जो कपड़ा जो होता है जो फूला फूला सा कभी कभी हो जाता है, तो वो नहीं होगा और अच्छे से सेट हो जाएगा। तो अब हम लोग फ्रिल्स कट करेंगे। फ्रिल्स के लिए मैंने 4 इंचेस लिया, आप चाहे तो 2 इंचेस भी ले सकते, आप अपने अकॉर्डिंग भी ले लीजिए फ्रिल्स, छोटा बड़ा जैसा आपको पसंद है। तो मैंने 4 इंचेस पे ही फ्रिल्स बनाया है। तो उसको हम लोग अब लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फ्रिल्स के लिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करना है। अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे तो हमारे फ्रिल्स छोटे या बड़े हो जाएंगे, तो वो अच्छे से नहीं बैठता है। तो पिनअप से सिक्योर कर लिया है। आप चाहे तो आप हाथ से सुई धागा से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पिन से कर ली क्योंकि रफल्स को बहुत ही संभाल के स्टिच करना पड़ता है। अगर हल्का सा भी इधर उधर हिल गया तो वो सही नहीं बैठेगा, इसलिए आप थोड़ा ध्यान रख के ही फ्रिल्स को स्टिच करें। तो ये देखिए मैंने चारों तरफ से फ्रिल्स को अटैच कर लिया है और अब मैं इसे स्टिच कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया इसे।